फिगर में देखिए इसमें 3 डिफरेंट फ्लोरोसेंट प्रोब्स यूज़ किए गए फिश कॉकटेल में। ग्रीन प्रोब हाइब्रिडाइज करता है टू एक्स क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर ओनली 1 कॉपी, रेड प्रोब टू द वाई क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर 1 कॉपी एंड एक्वा प्रोब टू द क्रोमोसोम 18 सेंट्रोमेयर 3 कॉपी। अब बी फिगर देखिए, इसमें ना मेटाफेज स्प्रेड है इन विच 2 फ्लोरोसेंट प्रोब हैव बीन यूज, वन फॉर हाइब्रिडाइजिंग टू द क्रोमोसोम रीजन 22q13 उसमें ग्रीन है, एंड अदर हाइब्रिडाइजिंग टू क्रोमोसोम रीजन 22q11.2 वो रेड है। देर आर 222q13 सिग्नल्स, वो दो हैं। वन ऑफ द 2 chromosome does not stain with the probe for 22q11.2 indicating a micro deletion in this region. ये abnormality rise देती है to 22q11.2 deletion syndrome, डाई जॉर्ज सिंड्रोम को। तो हम पढ़ रहे थे, तो हमने फिगर देखा सबटल माइक्रो डिलीशंस जो हमने बी फिगर में देखे, और कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई बाय द रूटीन कैरियोटाइपिंग एंड जीन एम्प्लीफिकेशन, जैसे कि MYCN एम्प्लीफिकेशन इन द न्यूरोब्लास्टोमा। नेक्स्ट है अरे बेस्ड जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए फिश जो है ना वो रिक्वायर करती है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द वन और फ्यू स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन जो सस्पेक्टेड है फॉर बीइंग अल्टर्ड इन द test sample. However, जो genomic abnormality है can also be detected without previous knowledge by using the microarray technology to perform a global genomic survey. फर्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म डिज़ाइन हुए हैं फॉर कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, CGH के लिए, जबकि जो नए प्लेटफॉर्म हैं इनकॉर्पोरेट करते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को, SNP को, जीनोटाइपिंग अप्रोचेस को, ऑफरिंग मल्टीपल बेनिफिट। इन अरे कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन ACGH में टेस्ट DNA एंड रेफरेंस यानी कि नॉर्मल DNA लेबल किए जाते हैं विथ 2 डिफरेंट फ्लोरोसेंट डाई के साथ दैट फ्लोरोसेंट्स रेड एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली। डिफरेंशियली लेबल्ड सैंपल फिर को हाइब्रिडाइज किए जाते हैं टू एन अरे स्पॉटेड विथ DNA प्रोब दैट स्पैन द ह्यूमन जीनोम एट रेगुलरली स्पेस्ड इंटरवल एंड यूजुअली कवर all 22 autosomes and the sex chromosomes. At each chromosomal probe location, the binding of labeled DNA from 2 samples is compared. अगर 2 सैंपल इक्वल हों, दैट इज कि टेस्ट सैंपल डिप्लॉयड है, then all the spots on the array will fluoresce yellow, the result of an equal admixture of green and red dyes. In contrast, अगर there is even a focal deletion या duplication हो जाती है तो probe spot correspond करेगा और it will show skewing toward red या green की तरफ, डिपेंड करता है gain या loss of material पे, अलो करता है हाई एक्यूरेट डिटर्मिनेशन कॉपी नंबर की वेरिएंट्स के अक्रॉस द जीनोम। नए टाइप्स के SNP चिप्स, न्यूअर टाइप्स ऑफ SNP चिप्स आर बेस्ड ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट, लेकिन प्रोब्स डिज़ाइन हुए हैं टू आइडेंटिफाई SNP साइट्स जीनोम वाइड विच हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर CGH. As discussed in chapter 1, SNP मोस्ट कॉमन टाइप के DNA पोलीमॉर्फिज्म है जो कि अप्रोक्सीमेटली हर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पे होते हैं थ्रू आउट द जीनोम, एग्जाम्पल इन द एक्सोन्स, इंट्रॉन्स एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। थस SNP सर्व करते हैं दोनों एज ए फिजिकल लैंडमार्क विद इन द जीनोम एज वेल एज अ जेनेटिक मार्कर जिसकी ट्रांसमिशन फॉलो होती है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। देयर आर सेवरल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो अलो करते हैं SNP को टू बी एनालाइज्ड जीनोम वाइड ऑन एरेज लाइक CGH probe method involving the SNPs can be used to determine copy number variation. In addition, by discriminating between the SNP alleles at each particular location, they also provide zygosity data. फिगर 7.39 में देखें अगर हम, तो इस फिगर में वेट अ मिनट, हाँ इसमें दिखाया गया एनालिसिस ऑफ अ कॉपी नंबर वेरिएशन विया SNP साइटोजीनोमिक अरे। जीनोमिक DNA जो है लेबल किया गया और हाइब्रिडाइज किया गया टू एन एरे कंटेनिंग द पोटेंशियली मिलियंस ऑफ प्रोब स्पॉट। कॉपी नंबर डिटरमाइंड हुआ है बाय ओवरऑल इंटेंसिटी एंड जीनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय अलीलिक रेशियो के साथ। एग्जाम्पल शो की गई है इन द इज द P आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 12 इन द पीडियाट्रिक ल्यूकीमिया। यहाँ पे नॉर्मल एरिया ग्रीन शो कर रहा है न्यूट्रल डिप्लॉयड DNA कंटेंट एंड जाइगोसिटी प्लॉट शो कर रही है द एक्सपेक्टेड रेशियो AA, AB एंड BB CNP जीनोटाइप्स का।
एनामलस एरिया रेड शो कर रहा है, डिक्रीज ओवरऑल इंटेंसिटी एंड द ज़ाइगोसिटी प्लॉट शो कर रही है लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, द AB जीनोटाइप। टुगेदर ये फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है प्रेजेंस ऑफ अ डिलीशन ऑन वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 12p। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस मीन्स फॉर एग्जांपल दैट SNP चिप्स कैन आइडेंटिफाई यूनिपेरेंटल डाइसोमी, जिसमें लॉस हेट्रोजाइगोसिटी का देखा गया है within an affected region having diploid DNA content. The current generation SNP array की quite comprehensive है with the largest containing greater than 4 million SNP probe. As a result, this technology is the mainstay of genome-wide association studies, GWAS described later. नेक्स्ट अब हम डिटेल में देखते हैं डायरेक्ट डिटेक्शन DNA म्यूटेशंस की बाय द PCR एनालिसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए PCR एनालिसिस जो इन्वॉल्व करती है एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन DNA का, अब वाइडली यूज़ की गई है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। अगर RNA यूज़ किया जाता है एज अ सबस्ट्रेट, ये पहले रिवर्स ट्रांसक्राइब होता है टू ऑब्टेन द कॉम्प्लीमेंट्री DNA और फिर ये एम्पलीफाई होता है बाय PCR। ये मेथड इन्वॉल्व करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, ऑफन एब्रीविएट होता है एज RT-PCR। टू एम्पलीफाई अ DNA सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दो प्राइमर जो बाइंड करते हैं 3' एंड 5' एंड ऑफ द नॉर्मल सीक्वेंस को, वो डिज़ाइन किए जाते हैं। बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट DNA polymerases and thermal cycling, the target DNA is greatly amplified, producing millions of copies of DNA sequence between the two primer site. DNA sequence PCR प्रोडक्ट की फिर एनालाइज की जाती है सेवरल वेज में। सबसे पहले सेंगर सीक्वेंसिंग, जो नेम की गई है आफ्टर इट्स इन्वेंटर नोबल लॉरिएट फ्रेडरिक सेंगर। इसको मैनी ईयर्स वर्क हॉर्स has for many years been the workhorse of genome sequencing, including the original human genome project. यहाँ पे एम्पलीफाइड DNA ना मिक्स किया जाता है DNA पोलीमरेज के साथ, DNA प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड्स एंड 4 डेड एंड डाईडिऑक्सी टर्मिनेटर के साथ, न्यूक्लियोटाइड्स A, T, G, C जो लेबल किए जाते हैं विद डिफरेंट फ्लोरोसेंट टैग्स। द ensuing रिएक्शन प्रोड्यूस करता है अ सीरीज ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ अप टू अ किलोबेस और सो। हर लेबल किया जाता है विद अ टैग जो कॉरस्पॉन्ड करता है टू द बेस एट विच द रिएक्शन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन of one of the terminator nucleotide. After size separation by the capillary electrophoresis, the exact sequence can be read and compared with the normal sequence to detect the presence of the mutation. उसके साथ compare किया जाता है। Many applications Sanger sequencing की and the other PCR based approach start हुई हैं to give way to the next generation sequencing discuss later, particularly when the analysis of large gene या फिर multiple gene चाहिए होती है। Nonetheless, even genes या फिर multiple gene require होते हैं Nonetheless, even 2016 में Sanger sequencing remains the gold standard for many genotyping assay. Another approach है for identifying the mutation at a specific KRAS oncogene जो कन्वर्ट करता है ग्लाइसिन को टू aspartic acid में, would be to add fluorescently labeled nucleotide C and T to the PCR mixture जो कि complementary होते हैं to either their wild type G या फिर mutant A sequence respectively। क्योंकि ये दो न्यूक्लियोटाइड लेबल किए गए विद डिफरेंट फ्लोरोफोर्स, द फ्लोरोसेंट जो एमिट होती है बाय रिजल्टिंग PCR प्रोड्यूस प्रोडक्ट कैन बी ऑफ वन और अनदर कलर, डिपेंड करता है वेदर C या फिर T बिकम इनकॉर्पोरेटेड इन अ प्रोसेस ऑफ प्राइमर एक्सटेंशन। 7.40 में देखें, इसमें अलील स्पेसिफिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एनालिसिस है फॉर म्यूटेशन डिटेक्शन इन अ हेट्रोजीनस सैंपल containing an admixture of normal and mutant DNA. Nucleotide complementary to the mutant and wild type nucleotide at a queried base position are labeled with different fluorophores such as incorporation into the resulting PCR products yield fluorescent signals variable intensity in accordance with the ratio of the mutant to wild type DNA present। ठीक है, ये देखिए पॉइंट म्यूटेशन है DNA में, GA प्राइमर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं और फिर ये वाइल्ड टाइप DNA, ये मिक्स्ड वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट DNA और ये म्यूटेंट DNA है।
ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि द एडवांटेज इस एलील स्पेसिफिक एक्सटेंशन स्ट्रेटजी का है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है देन द सैंगर सीक्वेंसिंग, अलो करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंसेस इवन if they make up small fraction less than 1% of the total DNA, as may be the case in the clinical specimen obtained from the patients suspected of harboring a malignancy. An ultra-sensitive variant is ASECA known as the droplet digital PCR literally separates the template DNA or complementary DNA into the thousands to millions of microscopic oil droplets such that any given droplet contain no more than one strand of template DNA along with the requisite PCR reagent. हर इस तरह का मिनी रिएक्टर फिर जनरेट करेगा इट्स ओन PCR प्रोडक्ट जो कि डिजिटली इंटीग्रेट होगा और एनालाइज होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेंट एलील. By assessing each template individually in parallel rather than in a single PCR reaction, droplet digital PCR has exquisite sensitivity, being able to detect as little as one mutant DNA strand in 10,000 or more wild type molecules. फिर है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. देखिए इंक्रीजिंगली नियरली all of the molecular diagnostic application requiring the assessment of DNA or RNA are being supplanted by so-called next generation sequencing NGS technologies, so named because of the Sanger sequencing mentioned earlier is now considered the first generation. Availability NGS technology has the potential to alter the molecular diagnostic radically by the sheer volume of the sequencing data. More than 1 giga base pair or 1,000,000 base pairs of DNA per day at relatively low cost. Entire human genome को little more than 3 giga bases होते हैं. So true, whole genome sequencing can be performed several times in a matter of days. In contrast with the Sanger sequencing, NGS technology यूज़ करती है platform in which the sequencing multiple fragment of the human genome के DNA या complementary DNA के होते हैं in parallel, massively parallel sequencing, significantly enhancing its speed. 7.41 में देखें principle of the next generation sequencing है. Several alternative approaches currently available हैं for the next generation sequencing and one of the more commonly used platform are illustrated. ए फिगर में देखें इसमें ना शॉर्ट फ्रेगमेंट जीनोमिक डीएनए के यानी टेम्पलेट डीएनए बिटवीन 100 and 500 बेस पेयर इन द लेंथ आर इमोबिलाइज्ड ऑन अ सॉलिड फेज प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्लास स्लाइड पे यूजिंग अ यूनिवर्सल कैप्चर प्राइमर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है टू द एडाप्टर्स दैट हैव बीन प्रीवियसली एडेड टू द एंड्स ऑफ अ टेम्पलेट फ्रेगमेंट. एडिशन फ्लोरोसेंटली लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की 1 per टेम्पलेट डीएनए पर साइकिल occurs in a massively parallel fashion at millions of templates immobilized on a solid phase at the same time. A 4-color imaging camera captures the fluorescence emanating from each template location corresponding to the specific incorporated nucleotide, following which the fluorescent dye is cleaved and washed away and the entire cycle is repeated. बी फिगर में देखिए पावरफुल कंप्यूटेशनल प्रोग्राम कैन डेसिफर द इमेजेस टू जनरेट सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए एट द एंड ऑफ वन रन एंड दीज सीक्वेंसेस आर देन मैप्ड बैक टू द रेफरेंस जीनोमिक सीक्वेंस टू आइडेंटिफाई एबरेशंस. ठीक है. देखिए फ्लोरोसेंटली लेबल जो न्यूक्लियोटाइड है हमने देखा कि वो इनकॉर्पोरेट की जाती है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो कि इमोबिलाइज होते हैं ऑन अ सॉलिड फेज with one nucleotide added per template cycle. An image is captured at the end of each cycle and the cycle are repeated until a read of sufficient length is generated to map each read back to the human genomes using sophisticated bioinformatics. In addition to the difference of time and the scale, another key difference between the NGS and the traditional Sanger sequencing is the ability of the former, यानी कि Sanger की, to detect the variant allele that occur at low frequency in the samples that contain a heterogeneous mixture of cell. In the Sanger sequencing, the lower limit of the detection for the variant allele frequency is 20% or more, thus requiring either homogeneous samples such as germline DNA or some from the enrichment such as microdissection of the tumor cells from a biopsy
that also contain normal tissue. Ability NGSK to read the same region of the genome multiple times, 100 to 1000-fold redundancy, allows detection of allele frequencies as low as 1%, making NGS particularly useful when searching for the mutation in the tissue biopsies that contain more non-neoplastic stroma than the tumor cells. देखिए clinical or research application NGS की which can be performed on either germline or somatic DNA or both include targeted sequencing, typically a panel of few to several hundred genes, whole exome sequencing WES which interrogates all coding regions of a human genome, and whole genome sequencing WGS which encodes the remaining 99% of the human genome including the regions that express non-coding RNAs. In addition to the DNA, NGS can also be used to measure the transcriptome RNA sequence and genome-wide binding site for the transcription factor or histones, and chromatin immunoprecipitation sequencing or chip sequencing. फिर है लिंकेज एनालिसिस एंड जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़. देखिए डायरेक्ट डायग्नोसिस म्यूटेशन की पॉसिबली है ओनली इफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर इज नोन एंड इट्स सीक्वेंस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. अगर सेवरल डिजीजेज जिनको जेनेटिक बेसिस है इंक्लूडिंग सम कॉमन डिसऑर्डर, डायरेक्ट जेनेटिक डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, आइदर क्योंकि कैजुअल जीन आइडेंटिफाई नहीं हुआ या फिर डिजीज़ मल्टीफैक्टोरियल है यानी पॉलीजेनिक है एंड नो सिंगल जीन इज इन्वॉल्व. इस तरह के केसेस में दो तरह की एनालिसिस परफॉर्म की जाती है फॉर अनबायस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एसोसिएटेड जीन्स. एक है लिंकेज एनालिसिस एंड GWAS. दोनों इंस्टेंसेस में सरोगेट मार्कर्स इन द जीनोम आल्सो नोन एज मार्कर लोकाई मस्ट बी यूज्ड टू लोकलाइज द क्रोमोसोमल रीजन ऑफ इंटरेस्ट based on their linkage to one or more putative disease causing gene. Marker loci usually यूज़ किए जाते हैं नेचुरली अकरिंग इन द वेरिएशन इन द DNA सीक्वेंसेस जिसको पोलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, टिपिकली SNPs as described previously. Though technologic breakthrough have enabled the application SNPs की to high throughput gene hunting. First is the completion of several large genomic sequencing projects, the HapMap project and 1000 Genome project, that have provided linkage disequilibrium pattern in multiple ethno-racial groups based on the genome-wide SNP mapping. Entire human genome can now be divided into blocks known as the haplotypes, जो कंटेन करते हैं varying number of contiguous SNPs on the same chromosome that are in linkage disequilibrium and hence inherited together as a cluster. As a result, rather than querying every single SNP in human genome, comparable information about the shared DNA can be obtained simply by looking for shared haplotype using single or a small number of SNP that tag or identify a specific haplotype. Second, it is now possible to genotype millions of SNP simultaneously in a cost-effective way using high-density SNP array described earlier. Next है linkage analysis. देखिए linkage analysis डील करती है with assessing shared marker loci का, that is SNPs in family member exhibiting the disease or trait of interest, with assumption that SNP in linkage disequilibrium with disease allele are transmitted through pedigrees. With time, it becomes possible to define a disease haplotype based on a panel of SNP, all of which co-segregate with the putative disease allele. Eventually, linkage analysis facilitates localization and cloning of the disease allele. Linkage analysis is most useful in Mendelian disorders that are related to one gene with profound effects and high penetrance. Next is genome-wide association studies, GWAS. It is now established that some of the most common human diseases जैसे कि hypertension, diabetes, mental disorder, asthma, इनको polygenic basis है with multiple genetic loci जो contribute करते हैं small independent effect result करते हैं in the disease phenotype. Conventional linkage analysis lack करता है the statistic power to detect such genetic variant. In GWAS, genome-wide association studies, large cohort patient के with and without a disease rather than the families are examined across the entire genome for variant SNPs that are overexpressed in the person with the disease.
This identifies the region of the genome that contain a variant gene or genes that confer disease susceptibility. The causal variant within the region is then provisionally identified using a candidate gene approach, in which genes are selected based on how tightly they are associated with the disease and whether their biologic function seems likely to be involved in the disease under study. In addition to the polygenic disease, GWS has also led to identification of a genetic loci that modulate the common quantitative traits in humans such as height, body mass, hair, eye color, and bone density. We end this chapter to reflect on the current genomic era of medicine. Advances in understanding the molecular basis of human disease are taking place at a breathtaking pace, as are molecular diagnostic techniques. Throughout this book, we will illustrate how these changes have impacted on the management of certain diseases in the clinic. By time this book reaches the reader, we hope that many more such examples will become commonplace. That's it. We have completed our chapter. Alhamdulillah.